Hello and welcome everyone to a very special episode of the Corporate Cup presents DAFA News podcast. I think we have been talking to you, and we have had Akash and Sanket. Hi Akash, hi Sanket. Hi Anil. Hi, Welcome Dada. to the podcast Hi, everyone. once again. And I just wanted to sort of first of all thank you guys for joining us on this podcast and sharing your thoughts on cricket and other sports with our audience, and also this the wonderful discussions that we have had over the last five podcasts discussing the probabilities and the predictions for the upcoming T20 World Cup, which starts on Sunday morning India time. And today we have an interesting discussion, sort of like a, what do you say, a pre-finale leading up to the main events, which starts on Sunday. And we have figured out our Dafabet predictions, our own, for the probable lineups for the semi-finalists. So we will discuss maybe who is our, in our prediction, is going to be the champion in this T20 World Cup. But before that, two very quick important pieces of news. One is we just came across this news that BCCI is going to hold a women's IPL next March with perhaps 5 teams and 22 matches. So you think this is finally women's cricket is turning the corner and perhaps finding the space? And it's not just the women's IPL. I think the women's team has been getting the kind of media attention lately that they haven't ever received. And also, just coincidentally, Julan movie on Mithali Raj came out this year, and movie on Julan Goswami, I think, is what I heard, is also in the works. So you know times have changed for women's cricket in India. Yes, absolutely. I'll say times have changed for women's cricket, and times have not changed. The girls have changed it by performing well globally at every event against every team, winning overseas series, reaching the finals of global events. So they have achieved it. Times have not changed. They have forced BCCI, they have forced the investors to invest money on their cricket also. So that is Correct. what they have done. Yes, Agreed. probably times Yes, have Sanket. changed 5 years late, but yes, this should have happened after the 2017 World Cup, but better late than never. And I guess 5 teams is a good progress from the 3 team, a weekend blockbuster type, to a 5 team event. Probably hoping it will go to an 8 team event just like the IPL in the coming 4 to 5 years. Yeah, I think that's a very very interesting sort of point you make. We would want to have to see this going off the proper IPL direction, so to get that semblance of women's cricket finding its proper place in the Indian cricketing spectrum. And one thing I have noticed lately also, women's sports, not just women's cricket here in India, of course, we are a cricket loving nation. However, women's sports globally has really taken off. Football matches, basketball matches, other matches are going full in terms of stadium. There is a lot of attention that's come in terms from the audience in the current under 17 World Cup, which is FIFA World Cup, which is going on in India. So I think women's sports as a whole has sort of changed lately, and it's actually fantastic news. If you see the number of women athletes participating and doing well in Khelo India games and in this recently concluded national games, I think I think sky is the limit, guys. Yes, absolutely. Women's sports is on the rise, and talking about Indian athletes performing well. So, main reason behind that is the ecosystem of Indian sports is now actually developing. The way the federations are working at the grassroots level, the combination of SAI and the ministry, this is what resulted in the results we are getting. And I was hearing to one of the official who was with the team in Commonwealth. He said, "We'll surely break our highest record of getting Olympic medal in next Olympic." And because we are working entire Which is seven, jointly, which yeah, is which seven is seven medals at this in the point in time. previous, yeah, Yeah, in the yeah, previous one, yes. yeah, and that is because the way we are working at the grassroots level, we are supporting every athlete, not just we are not supporting just a Neeraj Chopra, but we are supporting everyone who wants to be a Neeraj Chopra.
So that was Absolutely, his and loss. also Khelo India games and and the national games which has happened after 7 8 years, is a major step in the right direction, Sanket. Yes, it's the major step in the right direction. Probably everything is taking place at the right time, and surely in the next Olympic we could see 12 to 14 medals in Yeah, different absolutely, events. And if we get medals in individual events, that will be a major boost. That will basically mean that an individual has been focused on, and not just a team sport like a cricket or a football or hockey, which has been the case in absolutely. India till now. Absolutely. And And I yeah, think I personally believe, and I speak to a lot of people, offline, and the positive conversations around sports in this country, believe you me, guys, I have never heard this in the last 5 7 10 years. And you would always hear about cricket, but I think the change that has happened in the last 1 year, in Indian sports, and I think this decade will belong to Indian sports and Indian athletes. So moving on to sort of Indian athletes, the new thing that has come in, which has been introduced in the Syed Mushtaq Ali trophy that is currently on. So the power player, right, Akash, the impact player as they call it. yeah, it's So the impact player. Yeah. impact player, I think, you, although I find this a little paradoxical, because were the other 10 players not supposed to make an impact in the game? I don't know. But yes, Akash, you're already smiling, so I would first want to hear your thoughts about what is this impact player supposed to do which the other 10 people are not supposed to So Dada, the impact player rule is introduced by BCCI in this Syed Mushtaq Ali Trophy 2022. So I'll explain it to our viewers what it is. So impact player is somewhat similar to a super sub rule which was introduced by ICC later back do. Correct. in 2007 or something. So I'll clear what impact player is. So suppose there is a game going on between Mumbai and Delhi. So batting first, Mumbai scores something around 160, 164, right? Now Mumbai thinks that they need an extra bowler to defend this, and Prithvi Shaw is an average fielder who doesn't bowls, and he has no part to play in during fielding. So they can just replace Prithvi Shaw with someone like Shams Mulani, who is not in the 11. So both the teams have to give four substitute players' name, and they can substitute them with anyone before the 14th overs. After the 14th over of the inning, they cannot do it. So like I gave the example of Delhi. Similarly, taking example of Delhi, I gave the example of Mumbai. And similarly, I would take the point of view of Delhi. They think they have to chase 164. They might need an extra batter. So they think that Ishan Sharma is of no use while chasing because he bats at number 10, 11 and doesn't have any good record. So they replace him with Yash Dhul, who was not in the initial 11. So Yash Dhul can bat at any number, and Ishan Sharma will take no further part in that. So this is what BCCI has implemented as the impact player rule, and according to me, it's another innovation, another arm for the T20 game to just glorify it. And I think Yes, like if this, kind of like football where you are allowed Yes, three subs. Well, currently, there was a time last year, or I think this year, you were allowed five subs. And talking yeah, about, it's sort of like a super sub, like you said. And yes, we in the last night match of Manchester United versus Omonia in the Europa League, we actually saw the impact of a substitute, or say so-called the super sub. So Scott McTominay was brought in the last 10 minutes, and he scored the only goal of the match in the 93rd minute, which is basically 90 minutes plus the 3 minutes of the 3 5 minutes minutes. of added time. So yeah, yes, anything can happen. It's an added innovation. I agree to that. Yeah. Sanket, what's your thoughts? I think it'll just interest the more game even more, and I think it'll get people to predict even more that who's going to be the yes, impact player and what's probably really going to be the impact. as good to watch and as good an excitement package for the team fans. It's best for a captain or a management. Probably you are playing with 12 players. As Akash Correct. said that while bowling you could have Ishan Sharma, and while batting you will have Yash Dhul. Let's take an example of the Indian team. You are bowling first against Pakistan. You have six bowlers: Bhuvi, Arshdeep, Harshal, Akshar, Chahal, and maybe even have Harshal. I somehow heard that name, Harshal. Yeah. Okay, go on. you have him in the squad. If he bowls 2 overs, he's not going good. You replace him with Ashwin.
maybe for 1 or 2 overs, or you replace him. You bring in Rishabh Pant if the target is big, if you think the ball is spinning and they have left Right. hand. It is a good rule. Left arm bowlers. It is a good rule, and probably if this happens in international cricket, the role of an all-rounder could go down, and teams which have good squad strength will benefit from this, and they don't need to pay much attention in building the perfect 11. Build a perfect squad, and according to the situation, you'll substitute. और Got it. दादा ये जो रूल है ना, ये इंडिया टीम जो कि हमेशा स्ट्रगल करती है सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हाँ, या सेवेंथ बैटिंग ऑप्शन, इंडिया टीम के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत बार पर है। अगर बात करें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ना, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। They वो will get टीम a उतनी bowler and a स्ट्रॉन्ग batter. वो टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि उसको आप कैसे मैच करोगे। आज ऑस्ट्रेलिया I टीम think अगर it किसी just को I think it just overall uplifts the level of the as sports fans. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो खेल देख रहे हैं वो कितना लेवल ऊपर और जा रहा है, और जितना खेल लेवल ऊपर जाता है, खेल से जुड़ी हुई सब चीजें ऊपर जाती है, फैन नहीं बिल्कुल एंगेजमेंट देखिए, ऊपर जाता है, प्रेडिक्शन इनोवेशन करने की इनो इच्छा ऊपर जाती है, आपको आप और ज्यादा इन्वॉल्व होते हो गेम। देखिए इनोवेशन तो गेम में होते ही रहना चाहिए, तभी फैंस को मजा आता है। अगर आज भी ओल्ड स्कूल क्रिकेट हो रही होती वो अनलिमिटेड ओवर्स की, तो क्या हमें 2020 वाला मजा आता? तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। नो बॉल में फ्री हिट आया, अभी इनोवेशन तो आया। 10-10 आ गया है, 2020 हाँ तो अभी T10 आ पुराना गया होता है। दिख रहा है। हाँ, तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। और अगर इस इनोवेशन की बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप सपोज करिए अगर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 गेम्स होने हैं टोटल, तो एक गेम में हर टीम से 2 प्लेयर ज्यादा खेल रहे हैं, तो देखा जाए 200 प्लेयर को और चांस मिलेगा इस ट्रॉफी में, जिनको हो सकता है इस साल चांस ना मिलता अगर हम ओल्ड रूल से खेलते। तो 200 प्लेयर्स मोर, 200 मोर प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रॉफी। तो बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि ज्यादा प्लेयर्स को चांस दें। एंड Agreed. ज्यादा इसको चांस दे, लाइक प्लेयर स्किल को। फॉर एग्जांपल, जैसे बैटर को बॉलर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपका टीम अगर 170 बना रहा है, ओनली 4 बैट्समैन यूज कर रहा है, वो पांचवें बैटर का तो चांस गया ही बैटिंग में, वो बॉलिंग में कुछ करेगा नहीं। बट तुम एक बॉलर ला सकते हो, एंड मे बी 3-3, 2-2 का स्प्लिट, एंड यू कुड सी अ चेंज इन द रूल ऑफ, लाइक अ पर्टिकुलर बॉलर कैन बोल ओनली 20% ऑफ द ओवर्स। इसमें भी यू कैन टेक द एडवांटेज कि आपका एक बॉलर सिर्फ 3 ओवर डाल रहा है एंड वो जा रहा है। सो अभी अभी हमने जो जस्ट अपने छोटे से डिस्कशन में ये देखा कि हमने कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली जस्ट इसको डिस्कस करते हुए। तो मुझे लगता है फैंस को पॉसिबिलिटीज और उनके साथ प्रेडिक्शंस और उनके साथ पूरे जो हमारे स्पोर्ट्स के साथ एक गेमिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसके साथ जुड़ने में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा मजा आने वाला है आने वाले टाइम। सो आई थिंक ये नहीं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है क्रिकेट के लिए एंड इनोवेशन की तरह से देखा जाए। नहीं, बात करें प्रिडिक्शन की, तो आगे चल के ये भी प्रिडिक्शन हो सकता है कि आज इस टीम का इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होने वाला है। एग्जैक्टली ना, मैं वही कहने वाला था। मतलब आप जितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे उतनी प्रिडिक्शंस चेंज होंगी एंड उतने प्रोबेबिलिटीज बदलेंगी कि आउटकम क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये ओवरऑल स्पोर्ट के लिए और स्पोर्ट से जुड़ी हुई गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा इनोवेशन है आने वाले समय के लिए। बट ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा फैंस इसको कैसे लेते हैं। हमारे हिसाब से तो वी गिव इट अ थम्स अप टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड जहां तक हम देख रहे हैं कि आई थिंक आने वाले समय में वेदर दिस इज गोइंग टू बी यू नो implemented, who knows, maybe in the next IPL, which is Yeah. barely 6 months away, mota it could be, I think it and could be, yeah. इसका सक्सेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द कोचिंग स्टाफ ऑफ द आईपीएल एंड द टी20 लीग्स के जो प्लेयर्स लाइक जयवर्धना, संगकारा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है ज्यादा इसमें, बिकॉज दे विल बी द वन विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट द मोस्ट एंड लुकिंग एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। जी हाँ, बिल्कुल। एंड anyways, I think moving on to our sort of the final so-called predictions before the cup actually starts tomorrow, which is basically we had our prediction जैसे मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 टीमें हैं। ग्रुप 1 में इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड और ग्रुप 2 में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। आप लोगों ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता। आकाश, शो मी योर डायरी। नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मेरे प्रिडिक्शन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो अच्छा, मेरे प्रिडिक्शन है। इंग्लैंड तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका।
नहीं, इंग्लैंड सॉरी, ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ग्रुप ए, अच्छा ग्रुप इंग्लैंड 1, ऑस्ट्रेलिया, ओके। एंड ग्रुप 2 से इंडिया साउथ अफ्रीका, विद चलिए, इंग्लैंड टॉप। इंग्लैंड मेरा और आपका इंडिया साउथ अफ्रीका सेम है और इंग्लैंड सेम है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मेरा और आपका फर्क है। हम्म संकेत, व्हाट्स योर्स ग्रुप 1 में से प्रेडिक्शन? इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, एंड ग्रुप 2 में से इंडिया एंड पाकिस्तान. So probably we have 6 teams. So we have 6 teams: England, Australia, New Zealand from Group One, and Yeah. India, South Africa, and Pakistan from Group B. So if I just look at what our uh, what we can see on essentially Alphabet, so the top 6 teams is basically Australia, India, England, New Zealand, South Africa, Pakistan. Did we actually look at this and mirror this? Nahi, basically I don't it's think so. It was not deliberate. Let me tell नहीं all our viewers. तो इससे पता लगता है दादा, जो लोग मतलब हम लोग जैसे लोग ही हैं जो ये फेवरेट्स और नॉन फेवरेट्स डिसाइड करते हैं। हाँ. जी हाँ, I think yes. It was just impromptu that I flipped on what the top 6 teams on the Alphabet prediction were, and they were exactly the same 6 that we have. Of course, इन लोगों में difference है. Australia being number 1 over there, and India being number 2, England being number 3, and New Zealand being number 4, South Africa being number 5, and Pakistan being number 6. So अब मुझे लगता है जो discussion interesting होगी कि अब ये जो ऑर्डर हमने वहां देखा है, हमारे ऑर्डर से कितना, हमारा ऑर्डर क्या कहता है, what do we think? So it clearly tells us who's the favorites, so in these 6 teams. So Akash, what do you think? नहीं, मेरा ऑर्डर तो बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 1 एंड 2, एंड इंडिया साउथ अफ्रीका 1 एंड 2. सो इंडिया प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल, एंड इंग्लैंड प्लेइंग साउथ अफ्रीका इन सेमीफाइनल. सो जहां तक मुझे दिख रहा है तो एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता मेरे को नजर आ रहा है, अगर मैं अपनी कहेंगे दूर का विजन जो है मेरा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ ना, तो जिस तरह से अभी हो रहा है वो हमको रिजल्ट मालूम है कौन जीत रहा है। नहीं तो वो So Akash, I really want to know whether you are part of the Barmi Army or the Bharat Army. Now you have to reveal this on air for everybody to see. नहीं, अच्छा, बारहवीं आर्मी कहाँ से आएगी? मैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को विनर बता रहा हूँ ना, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल होता है। मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फाइनल में लेके गए हो आप, एंड वहां पे जो करंट फॉर्म चल रही है वो हमें पता है। तो आकाश, आई थिंक नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया के करंट फॉर्म पे मत जाइए। जब लास्ट ईयर वर्ल्ड अंग्रेज कप चले हुआ था गए ना, आकाश को छोड़ के लगता है. तो लास्ट ईयर लास्ट ईयर दादा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, लास्ट ईयर के यूएई हाँ, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से 2020 सीरीज हारा था, वो ठीक बांग्लादेश है? के पिच पे आ रहा था भाई. और नहीं, हारा हारा ठीक है ना, और वहां से आके वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही कहते कनिंग टीम है। वो शुरू में दिखा रही है कि फॉर्म खराब है, हाँ, और वापसी अरे बट अभी आप आप ही ने देखना तो कहा वर्ल्ड। था पिछले पॉडकास्ट में वो 6 में से 7 टॉस जीते, वो मैच जीते. हाँ, वो भी था फैक्ट, वो भी था, बट अभी क्या है ना, वो अपने घर में खेल रहे हैं, हम्म तो इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना। और मैं देख रहा हूँ आप लोग ने तो आप ग्रुप मेक स्टेज से एग्जिट कर दिया है। मैंने तो ग्रुप स्टेज से एग्जिट कर दिया. मैं आपको एक स्टार्ट बताता हूँ. इंडिया हाँ, 60% मैचेस जीता है ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया भी 60% ही जीता है. तो उनका होम एडवांटेज उनको इतना फेवर एक रीजन से नहीं करता है, कॉज बैटर्स प्रेफर करते हैं बॉल बैट पाए, थोड़ा पिच में बाउंस हो ताकि वो बाउंड्रीज लगा पाए. एंड ऑस्ट्रेलिया में ये फायदा सबसे ज्यादा बैटर्स को मिलता है. एंड टीम्स अपना पूरा जो कंस्ट्रक्ट करती है वो बैटर्स के अराउंड ही करती है. लाइक इन द इनिशियल 5-6 years वो ही होते हुए आया है. तो प्रोबेबली and उतना होम T20 एडवांटेज ना मिले ऑस्ट्रेलिया को. T20 is a हाँ. and T20, the shorter format of the game, as we are getting shorter and shorter into the formats of the game, it is becoming, unfortunately, a lot more batter friendly format. And it is becoming more difficult for the bowler. So इस मेरा ये कहना है कि इस सिचुएशन में bowlers जो होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो लोग सक्सेस पाए तो दे आर एक्चुअली ओवरऑल किसी भी टीम के, दे आर एक्चुअली sort of fighting against the odds, and they are sort of making a dent in this format of the sport. So Akash, I think आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल बोल दिया है, तो आप अपनी प्रिडिक्शन ये भी दे दो कि जीतने वाला कौन है। अब सुन ही लेते हैं जब पता है तो। नहीं, बिल्कुल इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, काफी चांसेस हैं।
और जैसा अच्छा उनका यूनिट है, मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड मेरी फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप की। Sanket, what about you? What's your favorite team for winning this Group World Cup? probably India, and I see an India Pakistan final. I will show you how. Wow. न्यूजीलैंड इंग्लैंड टॉप करेगा वहां एंड इंडिया यहाँ टॉप करेगा. इट विल बी इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल एंड इन इंग्लैंड पाकिस्तान सेमीफाइनल. प्रॉबेबली वही पाकिस्तान के साथ मैं 160 170 वाला मैच देख रहा हूँ. इंग्लैंड का बैटिंग स्ट्रांग है, नो डाउट, बट 160 170 का जिधर मैच हुआ, इंग्लैंड का कितना भी बैटिंग स्ट्रांग हो, पाकिस्तान वो मैच जीतता है क्योंकि उनके पास वो वाले चेजर्स हैं, वो वाले बॉलर्स है डिफेंड कर. एंड आई गेस And your favorite Babar and Rizwan? हाँ, माय फेवरेट नहीं, उनका वो गेम है 160. बाबर एंड रिजवान आर नो वे क्लोज टू बीइंग माय फेवरेट जस्ट कॉज द वे दे प्ले. एक प्लेयर रहता उनमें से तो ठीक है, बट वो दोनों ही वैसे खेलते हैं. दोनों दोनों को क्रॉस आउट कर रहे हैं. No, I think my predictions would be कि this World Cup can definitely go to you know Australia because I think but usually देखा गया मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए बोल रहा हूँ because of the same reason जो बट आकाश ने आपने तो न्यूजीलैंड को पास, आप तो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज से एग्जिट कर रहे थे, अभी कैसे ऑस्ट्रेलिया पे आ गए? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी लॉजिक मुझे थोड़ा सा कन्विंस कर गई बट यू नो आपकी लॉजिक मुझे थोड़ा सा कन्विंस कर गई फ्रॉम द फॉर्म बेसिस बट आई थिंक मुझे लगता है आई वुड से इंग्लैंड माइट जस्ट बी द न्यू चोकर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप मे बी. जैसे yeah because I see them play the way South Africa used to play आज की इंग्लैंड की टीम को देख के मुझे पुराना साउथ अफ्रीका याद आता है वही of किया course है उन्होंने not 2 the बार. current South Africa हाँ exactly 2016 के that is the फाइनल main में, reason सेमीफाइनल में. हाँ, बट एक उनको चीज अगर, उनको देख के वही लगता है sorry yeah आकाश नहीं, एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, कि नए बॉल से रन आप जरूर अच्छे बना रहे हो, बट पुराने बॉल से रन बनाना इतना आसान नहीं हो रहा है. जैसे हम इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि लास्ट के जो रन रेट रहता है 13-14 के साथ आराम से निकल जाता है ना. तो जब बॉल पुराना हो जा रहा है, बॉलर बैक ऑफ लेंथ हिट कर रहा है, वहां से रन बनाना इतना ईजी नहीं हो रहा है. तो इंग्लैंड की टीम के साथ क्या एडवांटेज है कि ऊपर हाँ उनके एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर अच्छा खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एडवांटेज है, इंडिया के पास भी एडवांटेज है. जो जिस टीम के पास ये एडवांटेज नहीं है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में काफी मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास ये एडवांटेज नहीं है, बबूमा आगे आप जानते ही हो, है ना. तो जो टीम्स नए बॉल से रन नहीं बनाएगी ऑस्ट्रेलिया में, जो स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस की जरूरत है उस तरह उसके बाद हाँ, तो हाँ तो तो है ना, तो नए बॉल हाँ से रन बनाना बहुत जरूरी होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पुराने बॉल से रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में अभी. ये प्रोबेबली देन ये आपके कंक्लूजन से केन विलियमसन और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स के लिए प्रेफरेबल कंडीशंस है. नए बॉल से आके सेट हो जाए मैं एक्चुअली एंड आई देन थिंक एंड में आई आके मार सके वो दोनों. in hindsight I would in hindsight I would say the team that actually can will be the surprise package and I'm actually going for a surprise of course I want India to win there's no goes without saying because India का जैसा फॉर्म रहा है आप अगर इंडिया के इस साल के मैचेस देखें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रीलंका जिसको लाओ उसको इंडिया अच्छी तरह से धो के वापस भेज रही है I mean, keeping Asia Cup aside, that was just sort of like a miss. But I'm talking about bilateral series. So मुझे लगता है कि of course India has the greatest probability, and I would want India to win, especially after 2007. काफी टाइम हो गया यार. तो नहीं नहीं, बिल्कुल. तो आई ऑल्सो हाँ वांट काफी इंडिया टाइम टू हो विन, गया. ऐसा नहीं है. हाँ तो I would my heart although I'm wearing white but I would bleed blue here and I would stick my neck out and predict India. However, I think if you want sort of my prediction of an outside chance of a team कि मतलब इंडिया के अलावा अगर कोई आप मेरे से पूछे तो I would say इस टाइम पे New Zealand because I think it's about time that team also brings up a surprise because they have lost too many and अरे भाई जीत गए ना जैसे वो टेस्ट में. संकेत दादा, एक टीम हाँ को जीतना है, नाम आपने 3 दे दिए हैं, ये कैसा प्रिडिक्शन है? ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए, इंडिया भी जीत जाए, तभी न्यूजीलैंड भी तभी जीत तो जाए. प्रेडिक्शन होता है प्रोबेबिलिटी नंबर अलग हो जाता है प्रेडिक्शन तभी तो होता है अभी जैसे हमने देखा कि 6 टीम जो हमने सिलेक्ट की थी सबके नंबर है डाफाबेट पे भी
तो सबके प्रेडिक्शन है यानी कि 6 के 6 जीत सकते हैं, ठीक है, ऑड्स अलग है, बात वो अलग है, लेकिन but yes, if I have to give for one, I would always go for India. But then that's what my heart would always say. But somewhere I think agar there is a team that can spring a surprise on the winning side, it could be New Zealand. And of course the similar sort of a math which Sanket gave in kinds of कि India Pakistan final हो सकता है मैं उसी तरह नहीं का एक वो मैथ तो हम और हमारे पड़ोसी देश दोनों यही चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाँ, फाइनल। वो तो 2007 का रिपीट हो जाए, रोहित शर्मा वापस 16 बॉल में 30 रन मारे। आई एम काउंटिंग इंडिया विनिंग ऑन रोहित शर्मा 2007 का लक फैक्टर। 2007 का रिपीट हो, 2017 का रिपीट ना हो। नहीं, वो 2007 का ही हो। और भी 21 का भी। ये रिपीट के चक्कर में गलत कैसेट लग गया और दूसरा गाना बच गया तो तो रोहित तो का अगले 2 दिन हो गया। गड़बड़। अगले दिन दिवाली है, वो भी फिर लोग चली गई पानी में। वो तो इंडिया पाकिस्तान, मैंने कल नहीं क्या वो तो फिर बोला, भी वो तो लीग मैच है। वो तो लीग मैच है। इंडिया ये मैच फिर हार जाए, भी वर्ल्ड कप जीत जाए, चल जाएगा। हाँ मैं नहीं ये पिछले वर्ल्ड कप साल भी अगले बोला था। हाँ नहीं वर्ल्ड कप जीते अगले 20 दिन बाद जीतेगी। अगर 23 को हार गई ना, 20 दिन पूरी मनुष्यत छाई रहेगी सबके चेहरे पर। फिर वापस दिवाली आएगी। No, I guess I think we are all too excited for the World Cup, T20 World Cup starting. India perhaps has an opportunity after almost 15 years to win the World Cup. They won the inaugural edition in 2007. We all have that one memory etched in our mind, और वो memory बहुत पुरानी हो गई है कि अब नई मेमोरी बनाने का टाइम आ गया। जैसे 1983 के बाद 2011 में नई मेमोरी बनी, धोनी का छक्का लगा एंड रवि शास्त्री ने कहा एंड इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप एंड it lifted the whole Wankhede stadium on that day. Similarly, I think we would want धोनी ने जो 2007 में वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था, इस बार रोहित शर्मा इसी तरह से कप T20 का लिफ्ट करें। ऑफ कोर्स आवर हार्ट्स will bleed blue. But as we have the predictions here, one going for England, two going for India. Let's see who wins it or whether it's the dark horse. I think super exciting होने वाला है ये वाला World Cup. Akash, we will see you. Sanket, we will see you again. Yes. And I think बहुत कुछ हमें बात करने का मौका मिलेगा इस वर्ल्ड कप पे एंड मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स दैट वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो चैंपियंस लीग हो रही है एंड जो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आने वाला है कुछ टाइम के बाद, तो उसके भी प्रिपरेशन की बातें हम करेंगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स चैट दैट वी आर गोइंग टू हैव। या संकेत, यू वांटेड टू से समथिंग? No. Okay. So there's a lot of sports chat that we are going to have. So जुड़े रहिए कॉर्पोरेट का प्रेजेंट्स डाफा न्यूज पॉडकास्ट पे। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम आने वाला है एंड वी गाइस विल कीप ऑन सीइंग यू एवरी डे। So just keep listening to us and keep supporting us by liking, sharing, and subscribing to the channel. Like I said, the 1,000 subscriber is going to win a fabulous prize and a voucher from us. So let's see if you are the 1,000 subscriber to our channel and you get a chance to win that prize. So इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेते हैं। आकाश, thank you very much. Sanket, thank you very much, and we'll keep meeting through this World Cup.